Hello, Shruti. Thank you for your time. How are you? Hello, I'm good, and thank you so much for inviting me. I'm doing good. What about you? Yes, I'm very well after watching you. So, Okay. what are you doing these days? Well, I'm in Indore right now, and lately, yeah, like I'm doing BBA from Indore. I'm from a small town called Satna in Madhya Pradesh, and I've moved to Indore for my further studies. I'm doing BBA. I'm a BBA second year student right now, and I'm opting for MBA in future, preparing for that. So yeah, it is how it is now. So, which college do you want to go? What's your dream college? Well, I'm hoping for IIM Ahmedabad, but let's see. Gujarat. Uh, at least a top business school, yeah. So, can you get back to your story from where do you start? कहाँ से शुरुआत की थी तुमने? थोड़ा बहुत बताओ अपने बारे में. तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही छोटे से शहर से हूँ मैं, और फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, एंड बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था. लाइक इवन like from coming back from school, I had this habit of turning the music on, TV on, and उसमें मैं सारे गाने सुनती रहती थी पूरे टाइम. And that's how I think I developed this uh, passion for music. तो बचपन में तो it was like very simple, just listening to music and that's it. But जैसे जैसे time बढ़ा, I started getting into the intricacies of it, कि how it is actually made, what's the technicality of it. So over the time, it evolved a lot actually. So now I have this passion for singing. People said that I sing well. My voice is good. So, so I'm trying on that too. Trying to write or compose. Learning bits and pieces every day. Yeah. So, can you name any artist who inspire you the most? Uh, as a kid, KK, Okay, his okay. song is I his love song is KK. like out of the world. Yeah. KK is the So best. yeah, growing up KK, Hmm. and now it's Arijit Singh. I feel like he's the most versatile singer out there right now. Yeah. तो फिलहाल तो वही है. मैंने भी अपने बचपन में मतलब केके को बहुत एडमायर किया, बहुत सुना है. So, Mm-hmm. and can you share your journey as a music and singing enthusiast? Okay. So as I said that as a kid I enjoyed listening to music. Mhm. Um, I just I don't know. I didn't think much. बचपन में इतना सोचा नहीं था मैंने. बस मुझे अच्छा लगता था गाने सुनना Mhm. और खुद को रिकॉर्ड करना. खुद की आवाजें So, रिकॉर्ड, मतलब मैं गाती थी और मैं रिकॉर्ड करती थी. आई यूज्ड टू लिसन टू इट ऑल डे. तो mhm. कहीं ना कहीं वहां से एक चीज आई कि कर सकते हैं. फिर लेटर ऑन इन स्टेज, लाइक आई वाज इन फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रेड, this आई स्टार्टेड सिंगिंग इन दिस ऐप कॉल्ड स्टार मेकर. वो कैरियोकी ऐप था. उसमें आई यूज टू सिंग ऑल दिस म्यूजिक. वहां से आई स्टार्टेड लर्निंग कि हाउ एक्चुअली what the technicality, like what is the pitch and how it is, what's the tempo and everything. That's how I came to know about that. And उसके बाद, I don't know, it just happened. This music is something that जो मेरे से अलग नहीं हो सकता. It's a part of me now. It's a part of my personality. It's in your So blood. it's what that, yeah, yeah, actually, it is. Like my parents do share a fair bit of interest in music as well. So I think वहां से भी थोड़ा है. I never really got professional training. I should remind you that. Just me as an enthusiast who loves listening to music and writing about it, learning everything, you know, what are the process involved behind it, behind making a music. तो आज भी मैं सीख रही हूँ. As I said, I'm doing BBA along Mhm. with whatever the passion that I'm following right now. तो साथ साथ में एक करियर भी बिल्ड करना है. एट द सेम टाइम आई एम होपिंग कि अगर मेरा म्यूजिक में कुछ हो जाता है तो
I'll try बिल्कुल and होगा, that as बिल्कुल well. होगा. यू आर द फ्यूचर. सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप कोई बड़ा इवेंट प्लान किया है या फिर कुछ ऐसी कुछ प्रोफेशनल क्लासेस या उसके बारे में बताइए कुछ. हाँ, जैसे अभी तो मैं, एज यू आर राइट, लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ. आई डोंट रियली हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. स्कूल के टाइम पे मैंने किया है कुछ परफॉर्म, बट नाउ आई एम होपिंग कि थोड़ा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी सो दैट आई कैन गेट दैट हेड स्टार्ट, जिससे एक एक मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. एंड देन आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, कि कहीं पे अगर किसी भी टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई एम जस्ट ग्रैबिंग इट. दैट इज माई मेन फोकस राइट नाउ, टू परफॉर्म एज मच एज आई कैन सो दैट आई कैन, मतलब जितना भी मेरा वो स्टेज फियर है मैं उसको हटा सकूं. एंड यू नो आई कैन पॉलिश माई सेल्फ ओवर द टाइम. तो सो राइट नेटवर्क्स नाउ आई कैन एम हेल्प यू जस्ट इन दिस. लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. हाँ. आप इंदौर में रहते हो, नेटवर्क्स बहुत है हाँ. उधर. नेटवर्क्स कैन हम्म. हेल्प यू. Oh yeah, definitely, definitely. I know a bunch of people who are ready to give me opportunities. So I know. Is there any connection of music and singing with your mental health? Oh, it plays a huge role in my mental health actually. As I said, like it's in my blood, as you said Mhm. it. जब भी मुझे लो फील होता है, and whenever I feel like कि I can't get through the day, मैं मैं बस अपना म्यूजिक ऑन कर देती हूँ. आई जस्ट लिसन टू द आर्टिस्ट दैट आई लव, और माय गो टू सॉन्ग. And that helps a lot. It helps a lot to lift my mind up of things, to take my mind off things जो मुझे नहीं, जिस पे फोकस करना है, all those negativity around me. यूजुअली होता Mhm. है हमारे हमारे अराउंड, बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं. वी जस्ट हैव टू फाइंड अ वे जिससे हम खुद से कनेक्ट कर सकते हैं. एंड आई फील लाइक म्यूजिक ऐसा है जिससे मैं खुद से कनेक्ट कर पाती हूँ, जिसके थ्रू. तो या इट इज व्हाट इट इज नाउ, लाइक ऐसा ही प्रोसेस होता है मेरा. जब भी मुझे लो फील होता है, मैं गाने सुनती हूँ, गाने गाती हूँ, उससे मैं खुद से कनेक्ट कर पाती हूँ. और आई वुड एडवाइस कि जब भी कभी इफ एनीवन फीलिंग लो, आप खुद से कनेक्ट करने का कोशिश करो. एंड आर्ट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू कनेक्ट विद योरसेल्फ. इट हेल्प्स बिल्कुल. यू, यू नो इट हेल्प्स यू इन, आप अपनी फीलिंग्स को आर्ट के थ्रू लोगों के सामने रख सकते हो. आप अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हो थ्रू आर्ट. दैट्स व्हाट आई फील. स्पीकिंग ऑफ आर्ट की, म्यूजिक के अलावा और किस टाइप में इंटरेस्ट है? क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? आई पेंट a bit. I like painting. I like पेंटिंग्स. playing with colors. Yeah, I like playing with colors. I'm not आई really कैन good at सी sketching कलर्स though. बिहाइंड यू इन द वॉल. Yeah, yeah. तो I like, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है थोड़ा बहुत. आर्ट एंड क्राफ्ट में इतनी कुछ मैं खास हूँ नहीं. आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग, बट आई लाइक टू प्ले विद कलर्स. तो whenever, लाइक म्यूजिक के अलावा, पेंटिंग, राइटिंग, आई राइट. आई फिल्ड माई जर्नल्स विद व्हाट आई राइट. तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं लिखती हूँ. और या, मतलब म्यूजिक के अलावा राइटिंग एंड पेंटिंग इज समथिंग दैट आई डू. तो इट्स मोस्टली आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वाइब. या. सो व्हाट्स योर फेवरेट बुक? माय फेवरेट बुक, गॉड, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ. ऑनेस्टली आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ रीडर राइट नाउ. उसके लिए बट मुझे यू बहुत लव सारी बुक्स. बुक्स पढ़नी होंगी, मैं उतना. या, आई लव बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स. आई लव टू नो अबाउट देम. बट लेटली आई थिंक स्टीफन किंग, मतलब मैंने उनकी कुछ बुक्स पढ़ी एंड आई फील लाइक ही इज अ ग्रेट राइटर. सो स्पीकिंग ऑफ सिंगिंग, स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, अब जैसे जैसे म्यूजिक की इंडस्ट्री एक टाइम से धीरे धीरे लेयर से लेयर चलती जा रही है टाइम से, तो एक 80s और 90s में जो म्यूजिक का टाइम था, जो कि काफी हम्म. एस्थेटिक था, काफी मतलब एक ओल्ड क्लास था, काफी मतलब अच्छा लगता था. आज के टाइम पे भी अच्छा है. और टाइम के टाइम से हम्म. जैसे जैसे चलता जा रहा है, तो म्यूजिक का टेस्ट लोगों से खत्म होते जा रहा है. जो जो न्यू न्यू हम्म. क्रिएटर्स आ रही म्यूजिक को लेके,
तो कहीं ना कहीं मतलब एक हम्म। इम्पैक्ट पड़ा है। जिस टाइप की म्यूजिक बना रहे लोग, जिस टाइप की लैंग्वेज उसमें यूज हो रही है, तो उसमें आर्ट कम हम्म। और एक फन टाइप से ज्यादा। म्यूजिक इज फन, बट बहुत ज्यादा ही हम्म। फन हो जाता है, मतलब एक उसमें आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वाइब खत्म हो चुकी है। तो उस हम्म। पे आपका क्या व्यू है? वेल, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आजकल का म्यूजिक सिर्फ ये रील्स की टारगेट मतलब ऑडियंस को टारगेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो हमेशा यही बनाना चाह रहे हैं जो ट्रेंड कर जाए। एंड हम्म। बिकॉज अब लेटली इट्स अ जेंजी ऑडियंस, ओके। एंड नो ऑफेंस टू देम, आई एम अ जेंजी टू, बट आई फील लाइक कि आजकल जेंजीज वो इंट्रिकेसी समझ नहीं पा रहे हैं म्यूजिक की। तो दे नीड समथिंग लाइक सिंपल, समथिंग दैट दे कैन रिलेट टू इंस्टेंटली। तो इसीलिए आई फील लाइक आर्टिस्ट लाइक अनुज जैन एंड ऑल दीज पीपल, ये लोग ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो अब मुझे यही लगता है, एज यू सेड, कि 70s और 80s का और 90s का टाइम एकदम गोल्डन एरा था। उस टाइम का म्यूजिक वाज टॉप नॉच। उसका तो कोई हम्म। मुझे नहीं लगता कोई कंपटीशन है। बट आई आई फील लाइक कि जो अभी म्यूजिक इंडस्ट्री अलाइव है बिकॉज ऑफ few artists like Arijit Singh, Shreya Ghoshal, Amit Trivedi, and all these people still make like great music जो सुनने में एकदम बहुत ही soulful लगता है। बट अगर ऐसा देखा जाए तो हाँ, मुझे ये चीज़ थोड़ी ऐसी लगती है कि अब आज के टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ वो रील्स वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आर्टिस्ट भी, बिकॉज विच इज नॉट रॉन्ग ऑनेस्टली, बिकॉज वहीं पे ज्यादा आपको ऑडियंस मिलेगी, वहीं पे सब। और आई फील लाइक वो बहुत ही आसान तरीका होता है अपना एक अपना आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए। सो डिजिटल एज है, सोशल मीडिया का काफी हम्म। लोग यूज करते हैं अपने जो हम्म। सिंगिंग करियर उसको लेवरेज करने के लिए। तो हम्म। आपके क्या प्लान्स है उसको लेके? या तो आप पूरा ऑल इन जाके पूरे अपने जो म्यूजिक इंडस्ट्री उस पे जाना चाहती हैं, या फिर एक जैसे अनुज जैन टाइप के स्टार्ट करना चाहती हैं, किस टाइप से? क्योंकि अनुज जैन ने काफी अच्छा काम किया। मॉडर्न डे के बोलते हैं। हम्म। वेल, एज आई सेड कि सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा प्रमोशन करना आसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले वहां जाऊंगी, अपनी एक ऑडियंस बिल्डअप करूंगी, एक थोड़ा कनेक्शन, एक नेटवर्क बनाना चाहूंगी। आई लाइक टू गो दैट वे फर्स्ट। कि ऑनलाइन पोस्ट करना, इट्स आई मीन या ऑफ कोर्स इट्स सेफर आई फील लाइक, बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, आई डोंट लाइक गोइंग आउट and meeting people physically. So I feel like doing it over social media would help me a lot. तो अगर मैं वहां से अपना एक फैन फॉलोइंग या एक तरीके से ऑडियंस अगर बिल्डअप करती हूँ तो वो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। तो हाँ, तो मैं वहीं से करने करने का शुरू करने का आई एम प्लानिंग। व्हाट्स योर पेरेंट्स रोल इन योर लाइफ? बैंगर। गॉड, दे प्ले अ ह्यूज रोल इन माय लाइफ। लाइक ऑफ कोर्स सारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स दे प्ले अ ह्यूज रोल, राइट? लाइक दे गिव बर्थ टू मी, उन्होंने पाला मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट, they play a huge role in my mental health awareness actually, क्योंकि as I say कि मुझे mental health awareness फैलाना बहुत सही लगता है। I always vouch for that. तो वो आई बस इसीलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे मतलब मेरी मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज किया है। जो हम जिस जनरेशन से हमारी पेरेंट्स आते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ यूजुअली मेंटल हेल्थ को एज अ टैबू ही ट्रीट करते हैं, विच इज लाइक आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज दैट्स हाउ दे ग्रू अप। बट माई पेरेंट्स वर नॉट लाइक दैट। मतलब उन्होंने कभी आज सच मुझे फोर्स नहीं किया। आई सेड दैट आई एम नॉट फीलिंग लाइक गुड, एंड देयर वर एट टाइम्स जहाँ मुझे बहुत लो फील होता था। आई वाज डिप्रेस्ड फॉर लाइक years, एंड दे हेल्प मी थ्रू इट। दे लाइक उन्होंने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, लेके गए, प्रॉपर मेडिकेशंस हुई, एंड आई फील लाइक दैट प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड नाउ आई वैल्यू इट अ लॉट मोर देन आई डिड बिफोर। एंड आई फील लाइक कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरी इस चीज को लेके कंसर्न्ड हैं और सपोर्टिव हैं तो मैं और भी ज्यादा रहूं। एंड स्पेशली लाइक बिलोंगिंग टू दिस Gen Z era where things are not easy and they are not
pretty, बहुत ही ज्यादा मेस है लोगों की लाइफ। तो एट दिस पॉइंट अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ दैम। इट्स वेरी गुड। मतलब आज की एज में, ऐसी एज में जहाँ पे आप पेरेंट्स बहुत, मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि जो मेंटल हेल्थ को टैबू लेके बोलते हैं यू आर राइट। तो हम्म। इस काइंड ऑफ सिचुएशन में जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको इतना सपोर्ट किया, तो हम्म। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो हाउ डू यू डील विद नेगेटिविटी? इट्स देयर, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं ये कह दूं कि इग्नोर करो तो इट वुड बी द वर्स्ट एडवाइस। You just can't ignore something that is in front of you, that is around you all the time. तो नेगेटिविटी इग्नोर नहीं कर सकते, मैं इग्नोर कर भी नहीं पाती। कब तक इग्नोर करूंगी, कभी ना कभी इट विल सर्कल बैक टू मी। तो आई फाइंड वेज टू डील विद इट इन अ वे दैट आर्ट, सबसे पहले तो एज आई सेड म्यूजिक, इट हेल्प्स मी अ लॉट। सेकंड थिंग इज राइटिंग थिंग्स डाउन। बिल्कुल। Someone did like gave me this advice to write things down whenever my head is a mess. So writing things down helps a lot. It like simplifies things. So यस। that helps a lot. And trying to be practical as much as you can. Trying to understand कि मतलब कितना to understand कि what is the problem. Like we've all heard this कि it's not about the problem, it's about how you react to it, right? यस। तो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है, दैट डजंट मैटर। इट मैटर्स कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो उस चीज को लेके। बिल्कुल। तो या दैट्स हाउ आई डू इट। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अराउंड पीपल हु लव मी, whom I love, they care for me। तो जब कभी भी मुझे ऐसा फील होता है, just sit with them and laugh with them and have a chat with them, so it all, like instantly uplifts my mood। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? No, I don't have a boyfriend. I never really thought of having one। What do you look in an ideal boyfriend? Not for you, but for any girl. Yeah, okay। What's your perspective? Loyal। Yes. Yeah, my perspective. It's a bit complicated, but bear with me. Mhm. I mean, the partner should be loyal. I'm not just talking about a boyfriend. I'm talking about a Mhm. girlfriend in partner, like as a partner in general, right? Mhm. They should be loyal. Loyalty is something that should be even in a friend. Friendship may be बहुत जरूरी है, and to be there, to be able to understand. Understanding is something that is necessary, and especially when there are so many mouths and less ears to listen। I feel like Mhm. अगर आप किसी के पास बैठ के उनकी बातें सुन रहे हो, तो it helps a lot। It plays a huge plays a Sure, huge sure. role। So Yes. I feel like कि empathetic, very important। It's a Mhm. cruel word, and अगर इस वर्ल्ड में थोड़ा empathy है किसी के अंदर, तो It's I a think wonderful thing. loyalty, empathy, understanding, Yeah, and understanding actually is being the, there। Yeah, yes, standing up for being them. there for them। Yeah, actually, it's not just about saying कि I'm there for you whenever you need me. It's also about being there whenever they need you। Yeah, Yes, it makes a I, huge difference। I completely agree with you. So, what do you think of toxic friends these days? Toxicity. It's everywhere ना, हर जगह है टॉक्सिसिटी। तो चाहे दोस्तों में हो, चाहे फैमिलीज में हो, it's everywhere। What I do would you say think? avoid them, stay Hmm? away from them, delete them, if you can। मतलब अगर हो सके तो it's Kill always them. quality over quantity। तो अगर possible है तो just get rid of them, man। It's not healthy to be around Hmm. toxic people। It affects with your mental health, and it messes with you। Yes, sure. तो श्रुति, अभी अपन एक रैपिड फायर Yes। करेंगे। जस्ट 5 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम इन जस्ट ओके। Okay। Okay। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर आइडियल फ्रेंड। Empathetic। If I had to like choose more than one word, then it would be empathetic and understanding। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन अ फ्रेंड इज फीलिंग डाउन? Huh? Sorry, can you repeat the question? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन अ फ्रेंड इज फीलिंग डाउन?
कोई फ्रेंड तुम्हारा लो फील कर रहा है, क्या कर सकते हो? मैं उसके पास जाऊंगी, बैठूंगी, और आई वुड जस्ट लिसन। एंड आई फील लाइक सुनने से काफी चीजें ऑलरेडी, मतलब हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो जाके बैठना है और सुनना है। आई वुड डू दैट। Listening is the key to someone's heart. या Who is your ideal from a movie person? सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर या कौन सा एक्टर एक्ट्रेस पसंद? ओके, जी, फिक्शनल कैरेक्टर है, जेक पेराल्टा फ्रॉम ब्रुकलिन 99। बहुत ही फनी कैरेक्टर है। इट्स जस्ट दैट मुझे वो इसलिए थोड़ा मतलब अच्छा लगता है बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ कॉप इन दैट मूवी, इन दैट शो। बट एट द सेम टाइम ही somehow balances out his life, his work life, personal life, everything, uh, considering the fact कि वो बहुत ही immature character है बहुत ज्यादा, but still he somehow, juggles with life, and I don't know, but he does that. तो मुझे वो character बहुत interesting लगता है. What's your favorite leisure activity apart from art and My favorite leisure activity, okay, if I don't have to count like my artistic side of it, I'd simply make a cup of coffee and put some music in the background and sit in a balcony and enjoy it. Enjoy the view and life in general. music? Where do you see yourself in next 5 years? In next 5 years, I'm opting for MBA, so I'm hoping that I get into a good college, in a good business school. जिसके आगे I might have a corporate life. अगर मेरा म्यूजिक करियर चलता है, then I might be, going around touring and having fun, doing what I always wanted to do. But yeah, yeah. But at the same time, learning all the time, learning new things, meeting new people, trying to, get as much as experience as I can. So Shruti, that's the end of our podcast. Thank you for your time. Okay. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके. And तब Same here, man. I mean, I've enjoyed it thoroughly. okay, Shruti. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for having me. It's not a game, it's a rich.